Good morning, friends. Myself, Nisha Gupta, and CA Shraddha. welcomes to you all on today's counseling session on paper 4 of your final level course, paper 4, that is Cooperative Economic Laws. Dear friends, in today's session, we are here to discuss the various important aspects related to the examination strategies as well the performance, how you can improve your performance, the various guidance related to that, and as well we shall be taking up the queries that you are facing while reading and going through the subject. In fact, my dear friends, we are here to give you the benefits that you can derive from this session. Many things will be taken up, many minor issues that you generally face while attempting of the paper. In fact, I could be saying that already by this time, you should be through with your studies. And now you must be focusing on the revision and polishing your knowledge. Besides with this, now it's the time to take care and look into that, how you can make the better thing which you are already to the best side. So this is how we can go within today's session. And also remember that no one is born genius. You should become a genius. This is requirement. And the genuine, you can see what is the best part of the knowledge, of acquiring knowledge is that you can learn anytime, anywhere. But yes, it is you who can do it. Unless you don't have that thing that yes, you want to do it, you cannot. So the life changes when you allow to accept it. So please go with that positive attitude and definitely you will become successful. So I will be saying there are many small things that you need to take care while attempting of the papers. These all are the small minor mistakes generally students commit that we have come to know from the examiner comments. Generally, they have pointed out the students do many small mistakes, but that small mistakes becomes a big thing in the life of you students. Sometimes just from 1 marks, you lose the game. So these small things make a big thing. So you need to take care how a small changes can bring a big change in your life. So one should accept all these mistakes with kind and grace so that they can lead to the success. Further with that, I could be saying that not only these things, but also that while reading and studying, the various sources that we have made available to you students, please go through that all available sources in order to gain the maximum benefit. So with this, now I would like to hand over the session to Shraddha to take forward. Dear students, as Nisha ma'am has already told you that we are expecting that you must have already be doing your preparations on full swing and you must have already have the detailed studies, and now it's the time for you to revise the subject as less than 20 days are left for the examinations. So now we will be focusing more on the part that how you can present your papers, how you can write the answers. However, in spite of saying this, we would be sharing with you that what are the various resources that the Board of Studies is providing you, from which you must have prepared, even if you have not used some of the resources. Still, time is by your side. You can use them and have the maximum benefit. So let's start with the session. As all of us know that this is the counseling session for paper 4, Corporate and Economic Laws. And Nisha ma'am has already told you that we will be resolving your subject-related queries. We will be guiding you on the paper pattern and how to perform in a very good manner, because most of the times, some of the students are facing this problem also, that they say that they have written the best answer, they were knowing everything, but they were not able to present it. So we will be guiding you with respect to those also. And then we will be focusing on how to present, how to read the paper, how to attempt the questions in a time-bound manner. What are the various publications from which you must have prepared your subject? The first is your study material,
which is the October 2021 edition. It is comprising of 3 modules: Module 1, Module 2, and Module 3. And then there is a booklet on MCQs and case scenarios, which is of the January 2022 edition. Then we have the revisionary test papers, which is of the May 2020. Then we have the revisionary test paper for the May 2022 examinations. And we have the mock test papers, and 2 series are provided, mock series 1 and series 2. Then we have the suggested papers for you. So why are there these different sources for you? Study material. It provides the basic knowledge for the subject. It is comprising, as I told you, of 3 modules. However, it is for the May 2022 examinations, the amendments up to 31st of October 2021 are applicable for you. The cutoff date is 31st October 2021. All those amendments are the amendments for the period of 1st May 2021 to 31st of October 2021 are not there in the study material. So for that, you have to read the study material along with the RTP that is being provided to you. The RTP is having those amendments in it. And apart from that, as you know, that the RTP is also containing many questions. There is a booklet on MCQs and case scenarios. As you know, that now out of the 100 marks, 30 marks paper is dedicated. That is, it has been named as Division A. It is dedicated specifically to the MCQs, and MCQs are asked in 2 manners. One is case scenario based MCQs, and other are independent MCQs. We will be discussing that in later stages. So this booklet on MCQs and case scenarios is having 108 MCQs and 40 case scenarios. Practice from there. But practice from there once you have done your studies from the study material, which of course, if you are attempting your paper for the coming examinations, you must have already done it. Then we have the mock test papers. What are these mock test papers? Mock test papers are basically, as the name suggests, mock. If we do bifurcated, it's mock test papers. So they are on the basis of the examinations. The paper pattern is same as the examinations, and the word mock is there so that you do it in the exact same situation, time-bound manner. Check out your mock test paper, set the timer for 3 hours, give yourself 15 minutes of preparation time, and 3 hours dedicated for that paper. It is in the same manner. It will give you an insight that where you are lacking. Not only in terms of your preparation, in terms of the subject, but sometimes you will feel, okay, I could have done this question, I could attempt only 80 marks question paper or 90 marks mock test. So you know that you need to buck up your speed. Or you might say, oh, it was just a 4 marks question and I have written so much. Then you will come to know how that what we say, that you should be writing the answer commensurate with the marks. So you should definitely attempt these mock test papers on your own. And जब हम खुद से अपना कुछ करते हैं सच बोल के, तो हमारी performance और better होती है, because you are the best judge how you can do it. You have the questions and you have the answers and you have 2 series. So you can think of it in the manner that before the examinations, you are having 2 rehearsals. Absolutely. In fact, we have also provided you the answers along with it. So what will happen when once you have attempted the paper, just look at the answer so that you can know how you should give the answers to that particular questions. Because at the final level, what we are looking is that there should be expected level of the paper, actually the examiners, they are expecting that you should write the answer in such a manner. Basically, many students, Shraddha, they generally ask what should be the presentation of the answers.
in order to get a good marks. But what happens, my dear friends? Presentation means it should be proper. Your content should be proper. That means the expected level, the language, the way you have given your answer in commensuration with the marks. It should be precise, to the point, and as well it should be complete answer in a sense with the proper conclusion should be there in your answer in order to give a complete answer. So that is being required to give a good quality of answers that is being expected at least at the final level. So you should not write in general. The language should not be so general as giving general students of this you can say bachelor course students. But since you are pursuing the professional degree, you're pursuing the professional course, so it's required that there should be a touch of this professional examination as you're attempting. So your language should be in such a manner, and in specific when you're attempting the law paper. So definitely the language is something which needs to be focused on. So kindly take care while writing the answers that how the answer should be laid down. So cross your answers with the provided suggested solutions in order that you can lay down or you can follow up somewhat in the same manner during the examination. And dear students, we will be discussing this further also, but at this point also, Nisha ma'am, I would like to tell them mock test papers or suggested papers, like you have the past year examination papers, which we call as questions and answers, both are given as in the suggested papers. Many a time students come to us that ma'am, you have written proper legal language. Dear students, if we are not giving you proper legal language, how will you learn it? क्या आप अपने प्रिंसिपल को जाके ये कह सकते हैं कि नहीं मैं एडवाइजरी देते वक्त मैं लीगल लैंग्वेज नहीं लिखूंगा? इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप ऐसा किसी को जवाब दें. वी in fact, I would like to add to it. At this level, when you are standing at the final level, while giving the examination, nobody is expecting you to write the exact language of law. Nobody, not even the examiners are expecting you to write the exact language of law. But at the same time, they are not expecting you to write vague answers, journalized answers. At least your answer should have the key points and the manner of writing. Because writing the answer in such a manner, like a 12th class student is writing, that will not suffice the purpose. You are at the verge of becoming, you are already a professional, you are already a chartered accountant. Just believe it. You are. Once you have that attitude in you, now you are already a chartered accountant. You will write the answers in that manner. And absolutely, you should believe on yourself. This is what Shraddha also told you. Because nobody can judge better than anyone else except you. Let's what the other may think about it. Let's make they keep on saying. Because there is one thing I remember an example of famous scientist, you know, that he was Edison, who was invented bulbs and all that. So what happened, he was very weak. So everybody was having the view that he's too stupid to pursue that scientific education. But he became a renowned scientist. So we cannot just go on what the others are thinking about yourself. But only the thing is that true to be yourself. आप खुद सच्चे हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना आप डेडिकेटेड है और कितना आप अपना कैलिबर या एफर्ट्स किसी चीज में डाल रहे हैं. हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट मिस्टेक्स तो सभी करते हैं, लेकिन फूलिश लोग उसे रिपीट करते हैं. तो हियर ओनली आई विल से यू शुड एक्ट वाइजली. अगर हम आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से आपको वो छोटी छोटी मिस्टेक्स के बारे में बता रहे हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, और अगर उन मिस्टेक से, उनके गलती से या उनके एक्सपीरियंस से अगर आप सीख लेते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो डेफिनेटली आप गेन करेंगे. एंड बिलीव मी, यू आर गोइंग टू रॉक. बट द थिंग इज दैट एक तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए. आप अगर ये कहेंगे मे बी हम तो ऐसा नहीं करते, मे बी आप नहीं करते हो, आप ये मिस्टेक नहीं करते होंगे तो कोई और मिस्टेक करते होंगे. बट नो बॉडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. बट वी शुड ट्राई कि हम अपनी गलतियों को अगर हमें पता चल जाता है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लें और साथ ही साथ हम उसे दूर करने की कोशिश करें. और मॉक टेस्ट पेपर्स एंड सजेस्टेड पेपर्स आपकी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप देते हो, चेक भी आप ही करते हो, अपने आप को असेस भी आप ही कर रहे हो. बिल्कुल. तो आपको पता है कि आप अपने साथ कितनी सच्चाई बरत रहे हैं. सो वंस यू आर ट्रू टू योरसेल्फ एंड यू विल अंडरस्टैंड
that if you have actually attempted the, first of all, you have actually prepared for the paper, and then you have attempted these mock test papers or the suggested question answers in the right manner, you will definitely be passing the examination with flying colors. So be true to yourself and do it. So coming further to the mock test papers, we have told that we have these following resources. We have discussed the study material. We are not going deeper into that, what all is there in the study material, what is the syllabus, because obviously you must have already prepared for the examination. Why we have to refer the RTP? RTP contains the amendments as well as more practice questions for you. So you have ample of things from the institute from where you can prepare. Like question, it is like different sources. Nothing is provided कि हाँ हमने आपको 200 question provide कर दिए एक जगह पे. It's not like that. But it's like that at different point of time, at different places, we are giving you many type of questions. Sometimes people might say that these questions are repeated. बाबा exam में भी repeat होते हैं. Question को change करके पूछा जाता है. और आपकी knowledge test होती है. So once you have your conceptual clarity, you can do anything. Conceptual clarity along with revisions. बिल्कुल. और साथ ही साथ आप आरटीपी वगैरह जो आपको दी जाती है उसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस जो हम देते हैं, जनरली देखिए कंसेप्ट्स वही होते हैं, लॉ वही है, ओनली द थिंग इज दैट कि कान आपने सीधा ना पकड़ के घुमा के पकड़ लिया. तो नेचुरल है कि जब आपको टेस्टिंग करी जाती है फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स किया जाता है, उसको घुमा के डिफरेंट पे पूछा, ये चेक करने के लिए कि हाउ मच यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. इवन इफ यू सी द आरटीपी, इट कंटेन्स मेनी न्यू क्वेश्चंस एंड एवरी टाइम वी ट्राई कि हम नए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दें. इट्स नॉट लाइक दैट कि होल कंप्लीट आरटीपी इज कंसिस्टिंग ऑफ न्यू क्वेश्चंस, बट यस आपके लिए कुछ न्यू क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, उसको डिफरेंट वे में रिपीट किया जाता है. बट सिंस इट बीइंग रिक्वायर्ड, सो वी गिव इट फॉर योर प्रैक्टिस. और जब आप जितनी बार उसको प्रैक्टिस करते हैं, यू आर गेटिंग द होल्ड ऑन द कंसेप्ट एवरी टाइम. एंड द की हियर इज लाइक लॉ में हम वर्ड्स के ऊपर जाते हैं, सेंटेंसेस की फ्रेमिंग पे जाते हैं, तो यहाँ पे वर्ड है आपके लिए प्रैक्टिस. द की वर्ड हियर इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि प्रिपरेशंस तो हो चुकी हैं. क्योंकि परफेक्ट आप तभी बनेंगे. आप परफेक्ट 100% नहीं, लेकिन आप कोशिश कर करके उस लेवल तक, टू सर्टेन एक्सटेंट तक आप उस तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं. सो एडिंग टू दैट, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, निशा मैम. Generally we hear that the practical papers, like in 12th and all those papers, we used to say maths and accounts and all those things. So in papers में ना हमें practice करनी चाहिए बेटा. This is true for these papers also. Theoretical papers also need practice. They just don't need cramming. अगर आपने अपना study material or whatever detailed book you are referring, you have read it 2 to 3 times. I'm saying read it. That means you have read it. And not just कि एक बार first time तो आपने glimpse लिया, उसके बाद आपने actually समझ के उसको read किया. I'm talking about the detailed book. Minimum 2 to 3 times. 3 times is at least, I should say. And then you are preparing the notes, or you are referring the notes from somebody, or any other notes, like we have the LVC classes for you. We will be discussing about that also. So then you are referring those notes. If you are following this strategy, at the end when you will be revising from those notes, you will have the benefit, because in your mind, you will at one point of time, you will be having the notes in your mind, and simultaneously जो आपके mind में जो lines चल रही होंगी, वो detail book की lines चल रही होंगी. जो बच्चों को लिखने की problem आती है, because they have not practiced, तो mind में तो chart की तो conclusion चल रही होती है, but lines आपको detail book से ही आएंगे. That's why we always recommend read the detail book, revise from the charts. इनफैक्ट श्रद्धा, बच्चों का ये मानना है कि भाई हमारे प्रैक्टिकल में पेपर से मतलब नंबर्स को लेके जनरली होता है कि बहुत मुश्किल होता है, उसमें तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस जो है. भाई लॉ में तो थ्योरी पेपर कोई भी हो, नंबर लाना उतना ही टफ है जितना कि प्रैक्टिकल में. तो ठीक है, आपकी फिर भी इजीली स्कोरिंग है, मुझे ये प्रतीत होता है. क्योंकि थ्योरी में क्या होता है, जनरली आप कितना भी बेस्ट लिख रहे हैं, पूरा नंबर 4 में से 3 ही मिलेंगे. 4 में से 4 आपको मिल ही नहीं सकते, क्योंकि nobody can be writing up to that level as it is. आप एक्ट उतार के लिख नहीं सकते, और जब आप कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं समवेयर आपके नंबर कह सकते हो कि थ्योरी में कभी भी पूरे नंबर्स नहीं आते हैं. जनरली बता रही हूँ,
इसके अलावा बेस्ट राइटिंग में आपके ज्यादा ये हो सकता है 3 नंबर्स, जो कि आपकी तरफ से बेस्ट आंसर होगा उस केस में। तो इसलिए थ्योरी पेपर्स रिक्वायर्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। जैसा श्रद्धा ने कहा कि आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नॉट ओनली कम्स फ्रॉम जस्ट रीडिंग वंस, यू नीड टू रीड ट्वाइस एंड थ्राइस एंड देन प्रिपेयरिंग नोट्स साइमल्टेनियसली। तो जब आप पढ़ के लिखते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में जाके और अपनी गहरी छाप छोड़ता है। It remains here. Brain is very sharp. Yes. It's a very good master or servant, dear students. It's a very good servant. Master आप खुद बनिए। बिल्कुल। तो बस यही है कि आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। पढ़ तो सभी लेते हैं, सब याद भी कर लेते हैं, लेकिन वही है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे लैक वन और समवेयर। और फिर उसकी वजह से फिर बाद में उन्हें मतलब लगता है कि हम इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए जितना हम कर सकते। बट चलिए कोई बात नहीं। तो इसके लिए हम आपसे यही कहेंगे, डू नॉट वेट फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस टू डू गुड एक्शंस, बट यू शुड डू समथिंग इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आल्सो। मतलब आप ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में भी अच्छा कर सकते हैं, बट ओनली यू नीड द थिंग इज दैट शार्पन योर स्किल। आप मेहनत करिए, रिवाइज करिए, अच्छे से फोकस रहिए, आपको क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, तो आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं, आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। Now, if some of you might not be knowing about few of the resources that we have talked about, so we will be telling you how to access these resources. These all resources are available to you on the website of the institute. Dear students, take a note of it. Every time, बहुत सारे students fail होके जब आते हैं बहुत बार, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था कि ये भी institute ने provide कर रखा है। Though I am saying less than 20 days are left, but even at this time, if you are able to gain something out of these sessions, we would like to tell you about few of the resources that we have said. So I will tell you how you can access these resources. These resources are available to you on the website of the institute. So you all must be knowing about ICEI.org. Dear students, are you able to see my screen? Okay. At any point of time, dear students, if you have any query, please do let us know. If there is any issue with our voice or any other query that you have, please message us to us through the query pad. So this is the website of the institute, and here you can go in the students section. Under the students section, you have the final course, and there are important announcements. There are 3 ways to go about it. Once you can directly go to the announcements to know the important announcements for the students, or you can go to the BOS knowledge portal, that is Board of Studies knowledge portal. In that you can go for all these things. Apart from that, there is one more way. Like if you want to directly go for the subject, go to the final course portal, go to the final course, and right now we are discussing paper 4, but this is equally applicable for all the papers. So we have our paper, that is paper 4, corporate and economic laws. You have the latest study material, it is available, and you have the corrigendum also here, which is applicable for you. So apart from that, we have given the relevant amendments separately. So these are there. Everything is provided to you. Just you need to make use of it. In fact, everything is at their doorstep. Only the thing is that they need to be aware that they are having the website and every sort of the facilities, whether it may be of any of the thing, whether it may be study material, whether it may be amendments, RTPs, MTPs, suggested answers, even past question papers are also there. Yes. And one of the most important thing that you can see here is the referencer for the quick revision. My dear friend, this has its own relevance. These are in fact, you can say a notes, a hand notes sort of a booklet is there for your reference. You can see here, which you can use at the time of the revision of the course. You can see that easily, that as you can see, we have given in short how you can retain the important concept. You can read from the thorough book
And when you need to retain from the examination perspective, you can simply go over here in this file and you can easily make it out and understand the provision, the crux of the provisions, what are the important elements of that particular provision. You can easily make it out through these diagrams, charts, flow charts, these tables. So this will make you to retain the concepts, as well as at the time before a revision or before examination, you can simply by going through this publication or this through this facility, you can easily retain the concept and to have a full utilization. And in fact, what you can do is like you have the study material. Students are generally like that study materials are very bulky, big. आपके पास hard copy होता है for of this capsule. We call it as capsule. Capsule खाया और काम खत्म. So we have given it the name of capsule. It's available for every subject. And tear up the page from the what we call it student's journal. Paste it there. अगर आपके पास टाइम है कि आप उसको या अपने हाथ से डायग्राम बनाएंगे, that's very good because आपको आसानी होती है अपने हाथ से लिख के याद करने में. But right now you don't have that much of time. Just tear up the page, keep it in your book wherever the provision is there. Do with it. You can revise. Like we have provided it for few chapters. So at least you can revise from here if you have not prepared the notes of these chapters. So we have it. At the end of all this, look, we are providing you all the resources. Even अगर आप देखेंगे, इसमें not only we have given the relevant chapter, but हमने कई जगहों पे हमने केस सिनेरियोस भी रिस्पेक्टिव चैप्टर से रिलेटेड डाले हुए हैं, ताकि आप मेक आउट कर पाए कि किस तरह के एमसीक्यूज और केस सिनेरियोस बेसिकली पूछे जाते हैं और कैसे उनसे आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, मतलब वो टॉपिक को कैसे टच किया जाता है. अगर आपने इन कंसेप्ट्स को अच्छे से रिटेन किया है, अंडरस्टूड किया है, तो डेफिनेटली यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द एमसीक्यूज. So please go through all these facilities that have been made available for you students. You can see how the concept has been given here in short. In short में होने से, उनसे plus bullets में होने से, points में होने से, आप उन each and every key points को याद कर सकते हैं, उसको easily समझ सकते हैं कि these are the important aspects of that particular legal provision. But these are just for your revision. क्योंकि अगर आप इसी से पढ़ने की, वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, अगर आप यही पढ़ने की सोचता है कोई स्टूडेंट, तो जब हम इतना पढ़ते हैं तब तो हम इतना लिख पाते हैं. अगर हम पढ़ेंगे इतना तो शायद हम इतना ही लिख पाएंगे, फिर मार्क्स भी आपके उसी तरीके से आएंगे. If you would see, if I take any example like concept of arm's length transaction, it is simply written a transaction between two related parties conducted as if they were unrelated so that there was no conflict of interest. Like I know the sentences, but if a student is there, if they read it, they will not be able to write it in a full language, like legible English language. So for that, you have to read it from the detailed study and revise it from here. So now coming back to we have given you that what are the various resources, and we have told you that how you can prepare from the various resources and what all is there. So this you can access this ICI.org on your mobile. But we have another facility for you, which is the BOS mobile app. It is available for the students. They can register themselves for it. Just go to the Google Play Store for the Android version and the Apple Play Store for the Apple phones. Download the app and then you can make full use of this app. In fact, बहुत से ऐसे students हैं श्रद्धा, they are not aware of this wonderful facility that has been provided by the BOS. अगर आप देखोगे, this is a single platform जहाँ पे आपके लिए हर चीज आपके लिए इतनी handy है कि आप उसको कभी भी कहीं भी देख सकते हैं. Even while you are traveling, you can use all these facilities. आप सिंपली देखिए, आपका उस पे सारे लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपके लाइव लेक्चर्स उस पे रन होते हैं. कभी आप कहीं जा रहे हैं तो आप वहां से सीधे बैठे बैठे अपने लाइव कोचिंग क्लासेस देख सकते हैं. आप साथ ही साथ अगर आपने कोई सेशन मिस कर दिया है बाय चांस, तो इन दैट केस यू कैन गो टू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल ओवर देयर, मॉक टेस्ट पेपर्स, suggested every sort of the facilities that are given on the websites that are also being given over here. आप अपने
सभी चीजों को कभी भी किसी टाइम एज योर कन्वीनियंट आप BS मोबाइल ऐप पे जाके देख सकते हैं. एंड वन एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर है क्वेरी पैड. मतलब आपने पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि चलो मैं कुछ क्वेरी पोस्ट करता हूँ, आपको स्पेसिफिक अपनी ईमेल आईडी खोलने की जरूरत नहीं, आप वहीं जाइए, वहां से आप डायरेक्ट क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं. So it has so many benefits. So ma'am was saying about some classes. Like we have been talking about, we have the virtual classes. You can refer this from the classes. So what are these classes? Do we have some classes? Yes. We do have some classes. And they are full-fledged classes. These are our live virtual classes or live coaching classes, as you may call them. This is like you have, like ours is paper 4, corporate and economic laws. And the classes are there. You just need to register yourself and view these classes. Right now, we are left with approximately 17 days or so. So what you can do, if you want to revise, if you are still having some doubt in some of the chapters, just go to the live virtual classes. It is also available on ICAI YouTube channel. So these are there. You have to refer batch 4. They are already there. Those classes have happened. They are already being conducted. So you will not be in a position to post live queries to the teachers, but the recorded lectures for batch 4 are already there. Just batch 4 के lectures हैं, Yashada, that I would like to bring to their notice. They are relevant for the May 22 examination. तो आपको live 4 के batches देखते हैं, and they have been given accordingly कि आपके लिए जो relevant है, मतलब उन्होंने उन amendments को भी ध्यान में रख के cover up किया हुआ है, which are relevant for you students. और अब आपकी 7th से आपके इंटरमीडिएट की क्लास स्टार्ट हो रही है, बट सिंस यू आर फाइनल लेवल के भी कुछ सब्जेक्ट्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो काइंडली अपडेट योरसेल्फ विद द शेड्यूल अवेलेबल एट द BS मोबाइल ऐप पे भी है. और आपको सो कि आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट ना देना पड़े. टू मेक फुल यूज ऑफ दीज sessions that we are having, so you would be flying, you would be passing your examinations with flying colors, but it is very much relevant for the students who are giving just one group. If you are giving just group 1 and you still have to prepare for group 2, then the classes which are going, that is batch 5, they are relevant for November 22. So you can refer it for the coming, and these are free of cost for the students. We are having very good teachers, and these are free of cost for the students. Students doesn't have to provide any cost. They are available anytime, anywhere. बिल्कुल. और आप रिवाइज भी कर सकते हो. और सबसे अच्छी बात है कि जब आप क्लास को देखते हैं वहां पर मोबाइल ऐप पे जाके, या आप उसकी डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाते हैं live.sc.org पे, तो भी आप जाके देखेंगे कि वहां पे सिर्फ लाइव लेक्चर्स ही नहीं है, बट उसमें आपके असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज डाले गए हैं, सेशन वाइज. तो उससे क्या होगा कि वॉट एवर सेशन you have gone through, you can also assess whether you are able to understand that particular topic or not. तो आप उनमें दिए गए जो आपके असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस है उन्हें भी सॉल्व करिए, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे और at any time, you can post your queries with respect to that particular session. And also सिर्फ queries आपके असेसमेंट के लिए नहीं, वहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल हैं. मतलब पढ़ने के लिए इतना कुछ है आप लोगों के लिए. इट्स जस्ट कि अभी आप तक एक चीज पहुंची नहीं है, तो आप लोगों को अपने आप को जागरूक करना है, अपने आप को देखना है कि ICAI BS पर्टिकुलरली आपके लिए क्या क्या ये डिपार्टमेंट आपके लिए मतलब मुहैया करा रहा है, फैसिलिटीज आपके लिए मतलब रेडी कर रहा है. आप प्लीज उन फैसिलिटीज को अवेल करिए. आप ICAI की वेबसाइट पे रेगुलर चाहिए, BS की नॉलेज पोर्टल पे रेगुलरली चाहिए, जो भी अपडेटेड हो वेदर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और द एग्जामिनेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. जस्ट मेक इट अ हैबिट कि आप रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करें, so that not only you will be knowing what are the recent things going on, what are the recent amendments, whether it may pertaining to any of the thing, but recent announcements and all the other things which are going and which are relevant for you for coming examination, you will be conversant with it. So make it a habit to go through the website. So moving on further, we will be discussing with you now. Since we are focusing on the examination, we have told you enough about what all resources are available to you, from where you must have studied and from where you can still now practice the questions. So and revise.
You can use this live virtual classes for revision also. So we will be going further for the paper pattern of the examination. अब भाई जब पेपर पैटर्न की बात आती है तो बहुत से बच्चे होंगे जिनको पेपर पैटर्न बिल्कुल ऑफकोर्स पता होगा, अगर उन्होंने पास्ट टेस्ट के पेपर्स देखे हैं या उन्होंने सजेस्टेड आंसर्स देखे तो डेफिनेटली दे आर वेरी मच अवेयर कि पेपर पैटर्न हमारा कैसा होता है. बट हाँ ये ठीक है, फिर भी कुछ नए बच्चे होंगे हु मस्ट बी अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इसलिए ये अगर आपको पहले से एक आइडिया हो कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है तो आपको इजी होता है वहां पर जाके एक स्ट्रैटेजी बनाते कि मैं हाँ इस तरह से क्वेश्चन को, अगर कोई क्वेश्चन इतने नंबर का आता है, इस तरह से आता है, इतने क्वेश्चंस होते हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन गो विद कि हाँ भाई हमें इतने अपने टाइम मैनेजमेंट को वो उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा और ट्राई करेगा कि वो पूरे पेपर को अटेम्प्ट करता. सो इसलिए एक तो आप सबसे पहले पुराने पेपर्स को जरूर देखें, अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देखिए. एंड एज ऑलरेडी सेड इट्स देयर ऑन द वेबसाइट, आपके पास क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, आप जाइए देखिए ताकि आपको एक लेवल ऑफ पेपर भी पता चले कि यस इस तरह से इसका लेवल होता है, इस तरह से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इसलिए प्लीज इन्हें देखिएगा. एंड एज फार एज मैं आपको इलस्ट्रेटिव एक पेपर पैटर्न समझा भी देती हूँ ताकि आपको बहुत इजी रहे ये सब चीजें समझने में. तो अगर आप देखेंगे, अगर हम एज अ होल देखें, हमारा पूरा पेपर जो होता है इट इज डिवाइडेड बेसिकली इन टू पार्ट्स. वन इज एमसीक्यूज क्वेश्चन जिसमें आपका 30 नंबर का एमसीक्यू सेगमेंट होता है, एंड अदर वन इज आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो कि 70 मार्क्स का होता है. तो आप ये देखेंगे कि आपके दोनों पेपर सेपरेटली आपको दिए जाते हैं एग्जाम में. अब आपके ऊपर है कि आप पहले क्या करना चाहते हैं, whether you would like to go with MCQ segment or whether you would like to attempt for the descriptive question. तो जो आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, उस समय ही आपके दिमाग चलने शुरू हो जाने चाहिए. यानी स्ट्रेटेजी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ. आप पहले ये सोचेंगे कि आपको कौन सा पेपर पहले करना है, उसके बाद कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, उसमें आप मार्क कर लीजिए. मार्क करना अगर अलाउड नहीं है तो जस्ट थिंक कि मैं पहले ये क्वेश्चन तो मेंटली नोट बना लीजिए, मेंटली आप इसे नोट कर लीजिए. प्लस आपको ये भी देखना है कि इसके अंदर क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना है, सो दैट ना एक बार तो आप क्विक ग्लांस देंगे 15 मिनट्स में, लेकिन उसके बाद आप उसी 15 मिनट्स में क्विक ग्लांस देने के बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि विच क्वेश्चन आई एम एबल टू अटेम्प्ट इट. ऐसा नहीं हो कि आप स्लो एक क्वेश्चन को समझने लगे और आप 15 मिनट्स तो आपके निकल गए, ऐसा भी नहीं हो. तो एक बार क्विक ग्लांस देने से आपको जनरल आइडिया मिल जाता है कि यस मैं किन क्वेश्चंस को कर सकता हूँ एंड द क्वेश्चन इन विच यू आर कंफर्टेबल. तो उस हिसाब से आप उसको अरेंज कर लीजिए अपने मेंटल नोट पे कि मैं पहले ये क्वेश्चन करूंगा, फिर ये करूंगा, पहले एमसीक्यू करूंगा या पहले डिस्क्रिप्टिव करूंगा. ओके. एंड इफ यू सी द 30 मार्क्स का जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, जब आप देखेंगे कभी आप देखेंगे वहां पे दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं. एक तो आपका केस सिनेरियोस टाइप होता है. तो आपको पता है केस सिनेरियोस में क्या होता है, नॉर्मली वी गिव अ सिनेरियो, वी गिव अ सिचुएशन. हम आपको एक सिचुएशन देते हैं, हम आपको उसमें एक इंफॉर्मेशन देते हैं और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दैट इंफॉर्मेशन इज बीइंग फॉलोड बाय 3 to 5 MCQs उन्हीं सिचुएशन पे जो बेस्ड होती है, जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है. तो नाउ व्हाट इज टू बी डन, आपको उन इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है. जो भी आपको दिया गया है आप अच्छे से उसे रीड करिए, क्योंकि समवेयर from that only, that from information what is given, from that information you have to write the answers whatever has been asked in the MCQs. और जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली इसमें आपके MCQs होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, because they are trying to test your understanding of the subject. और साथ ही साथ they will try कि आप उन कॉन्क्रीट जो आपको सिचुएशन दी गई है उन सिचुएशन में आप लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे. तो समथिंग व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टेस्टिंग योर एप्लीकेशन एंड एनालिसिस. आपको एनालाइज भी करना है, अपने लॉ को अप्लाई करना है, फिर एनालाइज करना है कि सिचुएशन में कि कैसे लगेगा और किस तरह से आप उसको कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को. क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं आप कि अगर ऐसी सिचुएशन है उस पर ये लॉ लगा तो ये चीज होगी. दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. सो these types of MCQs are being asked. These are the case scenarios. और जब हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो अगेन इंडिपेंडेंट में आपके दो तरह के MCQs पूछे जाते हैं. वन इज ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज टाइप, जिसमें आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ द लीगल प्रोविजन टेस्ट किया जाता है. तो दे आर ऑफ द डायरेक्ट नेचर एक्चुअली, और ये जनरली आपके 1 नंबर्स के होते हैं. और जब आप दूसरी तरफ की बात करें तो दे आर अगेन AA टाइप एप्लीकेशन एनालिसिस बेस्ड. तो इनमें आपकी वही टेस्टिंग होती है कि आप नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन द गिवन सिचुएशंस और द फैक्ट्स एंड हाउ विल कंक्लूड इन द गिवन सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ द लीगल प्रोविजन. आपका क्या
आंसर रहेगा कि आपने सिचुएशन कैसे एनालाइज किया। तो दीज आर जनरली ऑफ 2 मार्क्स कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। तो इस हिसाब से इनकी मार्क्स का कैटेगराइजेशन किया गया है एंड दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज। इसके बाद अगर आप देखेंगे मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आपका 70 मार्क्स का है, अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी। आपके टोटल यू तो 6 क्वेश्चंस आते हैं, वन इज कंपल्सरी। इस कंपल्सरी क्वेश्चन बेसिकली हम देखा जाए तो ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ये, ठीक है, ब्रॉडली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं आपके, और इसके अंदर फर्दर सब पार्ट्स हो सकते हैं ऑफ कोर्स। तो एक आपका होता है 8 नंबर का और एक होता है 6 नंबर का, यानी कि टोटल आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट आपके सारे ही क्वेश्चन इस पेपर के अंदर 14 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो ऑफ द 14 मार्क्स। अब यहाँ पे आपका क्या होता है, कंपल्सरी क्वेश्चन के अंदर जब पूछा जाता है तो दे टेस्ट योर इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस की टेस्टिंग की जाती है, यानी कि आपका जो यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, द नेचर ऑफ क्वेश्चन दैट बीइंग इज आस्क्ड फॉर द कंपल्सरी क्वेश्चन इज द इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस। अब बच्चों को ये डिफरेंस नहीं पता कि इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस में क्या पूछते हैं। तो अगर आप देखेंगे इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस में क्या होता है, जनरली दे इंटीग्रेट वन मोर देन वन प्रोविजंस। आपका जो क्वेश्चन बनता है नॉर्म जनरली वो क्या करते हैं, वो मोर देन वन प्रोविजंस पे बनाते हैं। दे क्लब द डिफरेंट काइंड ऑफ द इश्यूज इन वन क्वेश्चन में, जो भी आपकी सिचुएशन दी है, जो भी प्रॉब्लम या आपका जो भी प्रैक्टिकल सिनेरियो दिया हुआ है उसमें क्लब करते हैं, एंड देन आफ्टर इंटीग्रेटिंग द सेक्शन दे आस्क टू इवैल्यूएट। अब आप इवैल्यूएट करिए इन द गिवन सिचुएशन and with the ability to give the answer in the light of the different issues that is forming the part of the common question। आप उसके अंदर different जो issues है ना, इनको टच करके आपको आंसर के जवाब देने। तो this is something evaluation and synthesis based। तो आपका पहला क्वेश्चन जो होता है, फर्स्ट क्वेश्चन which is compulsory is evaluation and synthesis based, which is of course of 14 marks as you can see in the presentation। and one and the most important thing, ये क्वेश्चन आपका पूरा सिर्फ कंपनीज एक्ट से ही होता है as per past paper pattern, because this is just an illustrative paper pattern as per the past papers that we have received. However, the examiners are free to give you any other paper pattern also. So this is as per the past papers, as per the history we are trying to derive that what may happen next. हिस्ट्री भी है और साथ ही साथ ब्लूप्रिंट भी है। तो आप ब्लूप्रिंट डोंट इग्नोर, क्योंकि blueprint is there. yes, दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि ऑन पेपर्स, ठीक है। तो ब्लैक अगर आप ब्लूप्रिंट देखते हैं तो वहां पे इन्हें बता रखा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट विल बी कवर्ड फ्रॉम द कंपनीज एंड इट विल बी कवरिंग फ्रॉम द फर्स्ट 3 चैप्टर्स। लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका जो फर्स्ट 3 चैप्टर है आपके स्टडी मटेरियल में से, उससे ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 आता है। तो आपके ये तीनों चैप्टर्स के जो सेक्शंस है, प्रोविजंस है, दे आर इंटर रिलेटेड। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, तो इसलिए आप इन तीनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। हर एक सेक्शन अपने आप में रिलेटेड है। सो दिस 3 टॉपिक्स आर आल्सो इंटर रिलेटेड। सो काइंडली गो थ्रू दिस चैप्टर थॉरली एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लीगल प्रोविजन माइन्यूटली, सो दैट आप कभी भी इस क्वेश्चन पे कैन स्टक अप ना हो। और साथ ही इसमें कुछ सेक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई कंपनी फंक्शन करती है, जब उसको कोई मैनेजमेंट चलाता है, तो उसमें मैनेजमेंट चलाने में जो बंदे आते हैं वो कैसे अपॉइंट होंगे, वो कैसे वर्क करेंगे, उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, उनके क्या राइट्स होंगे, उनको कैसे कब वेकेट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, देन दे कैन रिजाइन। दीस आर ऑल द इंटर रिलेटेड वन बाय वन। और रिटेन करना तो बहुत ही इजी, क्योंकि एवरी सीक्वेंस इज देयर। अगर अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट के बाद किन टर्म्स पे अपॉइंटमेंट है, फिर कौन करेगा, कब करेगा, एंड इसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह है, कब उन्हें हटाना, तो सब चीज लिंक्ड है वन बाय वन। तो इट इज इजी टू रिटेन आल्सो दैट वे। So please go through the study material properly, and particularly in specific these 3 first chapters, which is covers the compulsory questions for your exam. There is one more thing to it. Certainly students say कि मैम हमें first question करने में हमारा बहुत time। Yes, generally the first question is such that it will take ample of time, and the reason being they are based on the evaluation and synthesis basis. Secondly, once you know the answer, you will be feeling like that I have to write everything. Don't do this mistake. Write according to what is being asked and what is the marks that have been allocated to the question.
if you feel that the answers that you have to write, because mentally you are still making the notes that, okay, I will write this in the answer. So if you feel that the question one will be taking too much of time of yours, attempt it at the last. You always have this option also. You can attempt the questions in any sequence, like you can attempt question number 1 first, or question number 1 at the last, or in between also, if you feel like that is your choice. However, once you have started with a question, like if you are starting with question number 2, for example, attempt all the parts of question number 2 together. It should not be like you have attempted question number 2A, then 1C, 3B. I'm just giving you an example. No. This is not allowed. The paper checker will not be correcting all the answers like this. So if you are starting, you can change the sequence, as in you can attempt any question first or last, but at least try that. If you are attempting question number 2 first, example, do A, B, C, D. Suppose in this you are not knowing answer number B. You leave the space for this answer and do A, space, C, 2, and write full 2C, 2B, 2 this, and leave the space. Suppose at the end also you don't know this answer and you have left the space, go back to it, just cancel that space. Like if you have left 1 page or 2 pages, just mark, just cancel it. जो आपने blank pages छोड़े. So this is one tip that is apart. This is also a tip for writing the exam. और जैसा कहा कि आप पहले जो डिसाइड करते कौन सा क्वेश्चन करना है, तो अकॉर्डिंगली जैसा श्रद्धा ने कहा, आप पहले वो क्वेश्चन कर सकते हैं. चेंज द सीरीज ऑफ द क्वेश्चन, बट नॉट एवरी पार्ट एट वन प्लेस पे ही होना चाहिए. प्लस ये आप जैसे हम कहते हैं हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वी गिव देम बेस्ट परफॉर्मेंस. हम अपना फर्स्ट उसमें ही इंप्रेशन में मतलब कहते हैं आपका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए. आप जाते ही यू वांट टू गिव यू गुड इंप्रेशन. सिमिलरली जब आप पहला ही अपना जो आंसर पिक करते हैं वो आप वो आंसर करेगा जिसमें आपकी बहुत अच्छी होल्ड है, मतलब आप जिसमें कंफर्टेबल है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है. सो बिगिन विद दैट. और साथ ही साथ क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर लिखते समय. ये हमेशा ध्यान रखिए ताकि किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन वहां पे ना हो. One more thing, I have written just one more thing for you. Avoid this thing also. That is just a moment. This thing, like if you are attempting question number 2, don't write it like 2D, then 2A, 2C, then 2B. Avoid this also. Like attempt them in a sequence. Just think about it. If you have to check a paper and you are doing like okay 2D, let me flip the pages. At least if you are then 2D, I will come back and go. This flipping of pages should, let's give some comfort to the paper checker also. Of course, he's giving us the marks. ये आपको सुनने में बड़ी कॉमन चीजें लग रही हैं, बहुतों को पता भी होगी, बट वही वाली बात है, इस कॉमन चीज को भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स ही हैं और ये कॉमन मिस्टेक्स जनरली हम लोग करते हैं. तो वी नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस साइड्स. तो जैसा बताया कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5. Yes, it is. I have given an example of question number 2, but this is question number 2, 3, question 4, question 5, and 6. Yes. So these are 5 questions, remaining 5 questions. So out of these 5 questions, we have to attempt any 4 questions. Yes. Choices given to you. Yes. और अगर आप देखोगे ना यहाँ पे अगर पैटर्न के क्वेश्चंस की अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका बेसिकली ब्रॉडली देखें तो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है. एक क्वेश्चन आपका कंपनीज एक्ट से होगा व्हिच विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 8 मार्क्स. अब चाहे तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन सब पार्ट्स में बढ़ सकता है, 4-4 या 6-2 या जैसे भी इनको करना है, 5-3, whatever the combination they want of the arrangement of this marks allocation, that may be possible. वहाँ पे सब पार्ट्स पूछ सकते हैं, बट दैट पार्ट विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ कंपनीज एक्ट. और जो दूसरा क्वेश्चन होगा दैट विल बी फ्रॉम द इकोनॉमिक लॉज, वो आपका 6 नंबर का होगा. तो अगेन सब पार्ट्स में बी पॉसिबल, may be possible. So if they want, they can ask a question of single 8 marks also, or single 6 marks also. So this is what for question number
2 to 6 2 to इसमें 6. से एक किसी क्वेश्चन में आपके इंटरनल चॉइस होती है, तो प्लीज ऑल्सो दैट कीप इन माइंड कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करना है. इफ ऑल चॉइस है, Okay. तो अब कई बार ये भी होता है कि बच्चे दोनों चॉइस के क्वेश्चंस लिख देते हैं. So one is an external choice that to put it again to tell you, 2 to 6 out of 5 questions you have to do 4, and in these 4 questions also one of the questions, like if you attempt any question, if one of the questions out of these questions may be having an internal choice, just keep that in mind. बच्चे कई बार सोचते हैं चलो हमें ना सारे लिख देते हैं, जो बेस्ट होगा ना वो चूज कर लेंगे, वो जिसमें भी हमें ज्यादा नंबर मिल जाए. बट डियर फ्रेंड ऐसा नहीं होता है. जो आपका ये एनी फर्स्ट 5 है, आप वो वही चेक करेगा. ही विल नॉट जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो प्लीज टेक केयर, आप पहले सोच लें एंड डोंट वेस्ट योर टाइम ये सोच के कि भाई हम सारे लिखते हैं और वो डिसाइड करेंगे कि भैया जो ज्यादा बेस्ट होगा तो वो वाला कंसिडर करेगा. तो ऐसा नहीं. And since the paper is of 100 marks, try to attempt the full paper. If you are like you have a 100 marks paper, if you are attempting only 80 marks of paper, just think about it, those 20 marks are already gone. अब एग्जामिनर जो पेपर चेकर है वो आपको 80 means 80 में से ही मार्क्स देगा. So आपका 20 marks are, you have already lost those 20 marks. But in spite of saying this, just because we have said that you have to do complete paper, don't write anything vague for this. Vague answers have to be avoided. Okay. Moving on further, like we have already told you about how to manage your time in the examinations. You are being given 15 minutes. Take the paper, read it, have a quick glance of it. Have a quick glance of it. You will come to know about the feel of the paper. Like sometimes the paper is too lengthy from the point of view of reading. This thing happens a lot. Like students say that the paper was running into pages. Paper was running into pages. We couldn't even complete reading the paper. That is there. So now here comes the point of those 15 minutes that are being given to you. Even if it's running into pages, just give it a quick glance. At least you will come to know about that, what the paper is telling you. We feel that the paper is lengthy, but at the end we see that somewhere some of the questions were like too damn easy. They were really, really, really easy, and they were not consisting of anything to write on. Like you might feel it's 4 marks, but the issue that is being raised, either it's too easy or the content to write in that is too easy. So you can decide prima facie in those 15 minutes that what all is being, the paper is asking you. Secondly, which question you will be attempting first. Thirdly, whether you will be attempting the MCQ portion first or the descriptive portion first. Fourthly, very important, I have 180 minutes. I'm not talking about the 15 minutes, but I'm telling you how to utilize those 15 minutes. I have 180 minutes and 100 marks for me. Okay. So I know for each mark how many minutes should be devoted. You do the calculations. You are very good at these things. एक चीज और है इस चीज में, कभी कभी नेचर ऑफ क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है. अगर उसका डिफिकल्टी लेवल आपका ज्यादा है तो आप वो कर सकते हैं कि थोड़ा टाइम एलोकेशन वहां ज्यादा कर दीजिए, और जहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो सिंपल है वहां पे आप टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं. तो दिस मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा, looking at the question, nature of the question. Yes. So I have dedicated for 1 mark, how many minutes should I give? What ma'am said. So this all will be decided, like your mind will automatically work if you have prepared who suggested an MTPs, all those things, and you are thorough with the provisions that how you will be doing the paper. So this can be divided in these 15 minutes. Then go through the questions quickly. We have told you select the question that you will be attempting from all the questions. Since you are given a choice also, mark the question which you will attempt it for. Mark here means mark it in your mind, because it's I think not allowed during the examinations to scribble on your paper.
allocate time. Okay, so now coming back to this one. What ma'am was saying, like we said, the first question generally takes more time because more issues are involved. You have to apply more mind to it because issues are involved, and sometimes you have to write more. But as I told you, in those 15 minutes of while reading some of the questions, you may realize that the question is of 4 marks. Sorry, this is marks. So question is of 4 marks, but the issue involved is too small, or the content to be written is too small. This happens. So now you can utilize this time in writing some other question which is taking more time. One more thing here. 180 marks are given, 180 minutes are given, 100 marks are given. So you have to decide. It's a balance. You have to make a balance where to give more time. This is journal that for 1 mark, how much time you should devote. Like 4 marks, multiply it into the number, time and minutes, and do the calculation. You will be in a position to do it. But sometimes if it's taking less time in a question, allocate that time to the question where you feel that you need to write more. Apart from that, once you have written the paper, just try. We have written 10 to 15 minutes. Okay, if you might not be having 10 to 15 minutes, just allocate some time. Try to keep some time wherein you can revise the paper. Last line. Write each answer in commensuration with the marks which the question carries. Answer should be precise and to the point. Very, very, very important. Write each answer in commensuration with the marks. This we have discussed. That's why it will not only help you to manage your time, but how much to write. What the students are repeatedly asking us, that how many pages should we write? How many pages should we write for such and such marks? Look, we have told you, but you have to कहते ना युद्ध तो आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा. As we say, we can teach you how to catch the fish, but will not catch for you. Yes. So time management balance तो देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा. दो हमने आपको बता तो दिया है कि आपको marks allocation के हिसाब से करना है, commensurate with the marks करना है. If it's a 2 marks question and you are writing 3 pages for that, because you know the answer for 3 pages, the examiner will give you maximum 2. He cannot go beyond that. That also we don't know whether they will be giving you 2 marks or not because it's a theory paper. So, but beyond 2 marks they cannot go. And this management, जो हम time management का आपको तरीका बता रहे हैं, this will definitely lead you कि आप within the given जो आपके 3 hours का जो पेपर है आपका 3 घंटे का, उसमें आप पूरा complete अपना पेपर attempt कर पाएं. इस तरह से आपको अपने कुछ क्वेश्चन के साथ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने किसी क्वेश्चन पे तो बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स डाल दिए और किसी क्वेश्चन में जो आपको आता था लेकिन आप वहां पे जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट यू हैव नॉट कम अप विद योर the answer in the best manner that you can give it. तो उस कंडीशन में आपका कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट हो जाता है. तो दैट कैन ऑल्सो भी आपका निकल सकता है, हट सकता है, आप उस कॉम्प्रोमाइज स्टेट से बाहर निकल सकते हैं. तो इसलिए आप अपने टाइम मैनेजमेंट को जरूर ध्यान रखिएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट attend the paper. Like you are at the final level, so I would like to tell you one thing. Like you are bringing lunch to your wherever you are doing your articleship. अगर खाने में कहीं पर नमक ज्यादा हो जाता है तो हम उसे दही से बैलेंस कर लेते हैं, अगर कम होता है तो हम उसमें थोड़ा अचार डाल के खा लेते हैं या नमक ऐड कर लेते हैं. We make the balance of things. In the same manner you have to attempt that paper also. बैलेंस आपको मार्क्स के हिसाब से भी करना है, what you know उसके हिसाब से भी करना है, टाइम अवेलेबल कितना है, और बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी आपको टाइम मैनेज करना है. If you are left with time, you can attempt the things better. If you feel you are left with less time because उसमें issue ही कम involved, just don't do too much for it. But having said that, answers should be precise and to the point. Writing vague answers is not allowed. Writing and filling pages for vague answers is not advisable. Allowed, I'm saying, not advisable. Crisp, to the point answers are expected. However, even if we are saying crisp and to the point, answer should not be made in the
way of charts, diagrams, or flow charts is not allowed, in the sense is not as advisable. You have to write proper legible English language sentences. कुछ लोग अगर ये सोचे कि आधा इंग्लिश और आधा हिंदी ले ले तो प्लीज ऐसा मत करिएगा. इसलिए आप पहले ही सोचिए जो आपका मीडियम है, जो आपने अडॉप्ट किया है, जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरा है, प्लीज उसी को करिएगा. Stick to that. Okay? So, though we have been discussing on all these things before only, like how to attempt the paper, we have told you, let's go to a bit further in that how the MCQs we will be doing. I think before going on to how to attempt the paper, can we tell them through a live example? Yeah, let's start with the MTP. Let's take some of the questions. So in that way, what will happen? Just a brief thing that when ma'am will be telling you answering the MCQs, we will see that you will come to appreciate the points more while we will be doing the MTP. And as far as, and then we can discuss that how we will be doing all these theoretical and practical questions. So let's start with the MTP first. Okay, just a moment. I suppose students कि आप लोग already MTP कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, तो प्लीज इनको ध्यान से पढ़िएगा. जो हमने आपको छोटी छोटी सी चीजें बताई, जो बारीकियां बताई हैं, प्लीज टेक अ रीड कि आप उन चीजों को थोड़ा सा फॉलो कर सकें. तो आप ये देखिए, ये हमारा MTP सीरीज 2 है. And if we can increase the font, I suppose yes. चलिए कोई बात नहीं, हम MTP सीरीज 2 की बात करते हैं. Ma'am, you start with it. I will just help in the rest. अगर आपने देखा होगा जो हमारा MTP सीरीज 2 अभी रिसेंट अप्रैल का है, इसमें हमने आपसे 2 केस सिनेरियोस पूछे हुए हैं. जो पहला केस सिनेरियो है, इट इज प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल ऐसे कंपनी का है, जो एक कंपनी है. इट्स अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रांस एंड नाउ ड्यू टू इट्स वास्ट बिजनेस, नाउ इट वांट्स टू ओपन इट्स आउटलेट इन इंडिया. वो इंडिया में अपना आउटलेट बांद्रा ईस्ट मुंबई में खोलना चाहता है. Now what the thing is that the related all the compliances part, जो उसके papers है, documentations है, that needs to be submitted before the ROC. तो यहाँ पे उन्होंने अपना एक बंदा अपॉइंट किया हुआ है जो सारे पेपर्स को सबमिट कर रहा है. अब क्या होता है कि जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं इंडिया में, जो उसका आउटलेट खुला हुआ है, नाउ दे नीड टू हैव अ साइन बोर्ड एग्जिबिटिंग द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, क्योंकि कंपनी फ्रांस की है, तो वो क्या करता है, जो एग्जिबिट करता है द नेम ऑफ द कंपनी और साथ में जो कंपनी उस कंट्री का नाम, तो वो फ्रेंच और डन्स इन द लोकल लैंग्वेज दैट इज द मराठी. ठीक है, वो ये सब चीजें करता है. और बाकी इसमें और भी चीजें बता रखा है कि उनके लिए ऑब्लिगेटरी होता है कि एट एवरी कैलेंडर दे हैव टू मेक आउट एट एवरी कैलेंडर अ बैलेंस शीट and a profit and loss account of its business operation in the prescribed form. Every requirement that needs to be done for operation of that particular company in India. और किस तरह से उनको अपने annual returns को submit करना है before the close of the financial year. So the facts have been laid down. So you need to understand. आपको facts को बहुत clearly पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे different issues आपको केस सिनेरियोस के अंदर मिलेंगे. तो आप उन डिफरेंट इश्यूज को ठीक से समझिए, उससे कोरिलेट करिए, सिंक करिए और फिर उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करिए. तो जब आपने फैक्ट्स पढ़ लिए, देन यू वेंट टू द एमसीक्यूज. एमसीक्यूज पढ़ने के बाद एक बार आप और क्या करेंगे, फैक्ट्स को आपको ये तो पता चल गया कि जो एमसीक्यूज जिस बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड पैरा कौन सा है. आप फिर से उस पैरा पे जाइए and then you start solving and giving the answer of that particular MCQ. अगर जैसे for example, let me take first MCQ जो आपका case scenario 1 में पूछा हुआ है, that according to the case scenario, Parfum International SA incorporated in France established its first business outlet in Bandra, Mumbai, and exhibited on the signboard its name and the name of the country of its incorporation in French and Marathi. So from the following option, choose the one which indicates the correct combination of the languages
languages to be used by the company to display its name and the name of the country of its incorporation. ठीक है, अब आप देख लो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो परफ्यूम इंटरनेशनल कंपनी जो है, जो फ्रांस में इनकॉर्पोरेटेड हुई है, has established its first business outlet in बांद्रा ईस्ट मुंबई, और जो उसने एग्जिबिट किया है ऑन साइन बोर्ड इट्स नेम एंड नेम ऑफ द कंट्री इन फ्रेंच एंड मराठी, जैसा कि फैक्ट्स में भी बताया गया है. अब आपको गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जो कि ये बताए द कॉम्बिनेशंस ऑफ द लैंग्वेज टू बी यूज्ड बाय द कंपनी टू डिस्प्ले इट्स नेम एंड द नेम ऑफ द कंपनी ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. अगर आप देखेंगे जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देखेंगे कि वो चारों ही ऑप्शन इतने नियर हैं कि अगर आपको लॉ नहीं पता है तो आई एम टेलिंग यू विल नॉट बी एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर. क्योंकि आप सोच रहेंगे कि भाई कंपनी फ्रांस की है तो फ्रेंच तो होगा ही होगा, फिर आप सोचेंगे कि चलिए हिंदी, क्योंकि हमारे यहाँ पे आमतौर पे बोली जाने वाली भाषा है, इट्स ए कॉमन लैंग्वेज इन मोस्ट ऑफ द एरिया, जो हमारे इंडिया के अंदर हिंदी इज स्पोकन एक्चुअली. सो व्हाट विल थिंक, यू विल बी थिंकिंग दैट द फ्रेंच एंड हिंदी विल बी द करेक्ट आंसर. Some will be considered that English is the official language, but they will consider the English as well as French as the correct option. Some will think कि चलो इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ लोकल लैंग्वेज मराठी होगी, और कुछ ये सोचेंगे कि भैया फ्रेंच और हिंदी का कॉम्बिनेशन बना लेंगे. अगर आपको लॉ नहीं पता, लॉ रिक्वायरमेंट क्या कहता है कि इन सच ए केस ऑफ द थिंग, क्या कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है, बाहर की कंपनी है, तो उसको अपने साइन बोर्ड में क्या एग्जिबिट करना है, तो he will be definitely confused. So what the law says, अगर आप देखेंगे आपका लीगल प्रोविजन जो है 382 आपका कंपनीज एक्ट का, वो ये कहता है that every company shall conspicuously exhibit at the outside of every office or place where it carries on its business in India the name of the company and the country in which it is incorporated in letters which is easily legible in English characters. देखिए यहाँ पे clearly defined provision के अंदर English character and also in the characters of language or one of the language in general use in the locality, यानी कि local language जहाँ पे वो ऑफिस या प्लेस ऑफ बिजनेस इज सिचुएटेड, जहाँ पे वो ऑपरेशन हो रहा है बिजनेस का, वहां पे जो लोकल लैंग्वेज यूज होती है दैट थिंग. सो अकॉर्डिंगली आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इट विल बी ऑप्शन ए, सिंस the Parfum International established its business outlet in Mumbai, so the local language Marathi will be definitely there, and the name of the company of its incorporation, since it is incorporated in France, so French. तो आप ये देख सकते हैं कि इंग्लिश फ्रेंच है, तो वहां पे जनरली लोग इस चीज से कंफ्यूज हो सकते हैं, बट एज पर द लॉ इंग्लिश एंड द मराठी, क्योंकि इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस जो है हमारा इंडिया के अंदर है और इट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जो लोकल लैंग्वेज मराठी है उसको डिस्प्ले करेंगे साइन बोर्ड में, रेदर देन वहां फ्रेंच को हम करेंगे जो कि फ्रांस की कंपनी. तो जनरली होता है कि स्टूडेंट्स मे बी कंफ्यूज इफ दे वोंट हैव द क्लैरिटी ऑफ द लॉ. सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, दैट विल इट विल बी इन इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज. अब इसी तरह से अगर आप एक चीज और क्वेश्चन उठा लेते हैं, हम ये पूछा हुआ है कि आपको ये बताना है कि मैक्सिमम विद इन हाउ मच टाइम Parfum International SA is required to file its annual return with the jurisdiction, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का जुरिस्डिक्शनल है वहां पर. अब आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, नाउ यू नीड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. वही है, अगर आपको लॉ का ज्ञान नहीं है, यू आर नॉट कन्वर्जेंट विद द लॉ प्रॉपर्ली, then again you will be confused within the provided options here. तो आप देखोगे अगर हमारा लॉ क्या कहता है, चलो हम अपना ये देखते हैं कि इसमें लॉ क्या कह रहा है. अगर हम ये फोर्थ देखें, हमारा जो रूल 7 है ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज का, ये कहता है दैट एवरी फॉरेन कंपनी शैल प्रिपेयर एंड फाइल विद इन द पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर. प्लीज देखिएगा, लास्ट डे ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर टू द रजिस्ट्रार द एनुअल रिटर्न with such fees as provided in the law containing the particulars as they stood on the close of the financial year. तो आपको 60 days किससे 31st मई यानी लास्ट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपका 31st मार्च का जो पीरियड है लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, वहां से आपको 60 days कैलकुलेट करना है. तो विद इन दैट पीरियड यू नीड टू
submit the file this annual return. So accordingly, आपका जो answer होगा, if you conversion फिर होगा, you can make it out कि platform international को कितने दिनों में annual return file करना है ROC को, and that is the maximum period, and it should be within 60 days from the last day of its financial year. That is 31st March से जो भी 60 days होगा. तो बस इस तरह से इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो option A is the correct answer. So before we moving ahead with the further questions, so let's take a break for 2 minutes and we'll be back soon.
Welcome back, student. And sorry, student. One thing that I would like to bring to your notice: many of you students are not aware where actually the mock test papers are available. So we just want to bring to your notice, starting at there is a knowledge BS knowledge portal. You will be finding on the beginning of the page itself that MTP series 1, MTP series 2. So from there you have to go into the MTP series 2. So I'm just opening the mock test papers for your reference, so that we can discuss upon some of the questions which you can look into what are the small things or the you can say the things is required to be taken care of while attempting the paper. So these are the mock test papers. They are the latest ones are uploaded here. So this was one correction that we wanted to bring it to your notice. After few days, they will be brought under the final course Subject also. tab. Subject tab. However, since we want all the students to attempt them, so recently this change has been made that they have been put at the first level, that about BOS knowledge portal, and then they have for the benefit of the students, this have been provided tab number 2 and tab number 3. Yes. Now moving to the case scenario 2. Okay. In the case scenario 2, the case scenario 2 is based on the FCRA. If you see the FCRA, this is the law which is covered in the economic law portion. And you must be seeing that case scenarios are also being asked from this portion also. So in this, you need to understand the law again. Since in this case scenario, we have only raised 3 MCQs. So you must be seeing that I have told they may be from 3 to 5 MCQs. There is no fixed criteria that only 5 questions will be asked. It may be varying from 3 to 5. So in this case scenario, you must be seeing that Mr. Mohit is there. He did the BTech from IIT Mumbai, and he intend to move for his further studies to pursue from US. Then based on his qualification and ranking, he got the scholarship from a US company. So he was there for a period of 3 years after completing the MS, and he served over there only in a US company. His father, Shamlal, is the politician, is a member of parliament. Then he also just want to appear in an election, the forthcoming election, because his present tenure is going to end after 6 months. So Shamlal just planned to fight the election again in his individual capacity because he did not get the ticket from any of the parties in the forthcoming elections. So in that, what happened? He is having many friends. His close friends were there, who were living abroad. So he just thought to take some sort of fund from him for the purpose of his election, so that he can utilize that fund for his election purposes, for his advertisement and everything. So Shamlal's sister, who was also residing in US, so she, on the occasion of the festival Bhai Dooj, sent USD 1,000 to his brother. So Shamlal now went to US for official visit also to end the road transportation system in US along with the transport minister. There he was offered the hospitality by the US, and they all provided the free traveling and hotel stay, every sort of the hospitality. So now these are the facts. If you see, the main crux is that in this whole case scenario is that though his son was residing in that abroad in US, and now his father want to fight for an election, for the forthcoming election, and he requires the fund because he was standing in the election in the individual capacity. So he asked many of his friends who were residing over there, and he sent his son to take their help for the fund required for the election. And also, besides that, his sister was also there. So from the sister also sent certain amount on the occasion of Bhai Dooj, you can say on the basis of natural love and affection. And besides with that, he also went for a tour over there, and he got different side of the hospitality from that particular in USA by a transport company. Now, this is the crux of the whole case scenarios. Now, the question that has been asked, so let's take one of the question here. The question, let's take fifth question, that Mohit is collecting funds on behalf of his father for forthcoming election, which will be remitted to India. So whether such foreign contribution is permitted. So here you are saying that he has asked his son to get the fund collected for his father. So whatever his friend from his friends, the foreign friends, those friends who were residing over there, now he just want that funds to be remitted to India.
whether such fund contribution is permitted. So now if you say, you can simply say, yes, anybody can give certain amount of fund with certain restrictions marked over there. But if you are conversant with the provision, then you can find out what exactly the law says, and according to the law, you can come up with the correct option. So if you see here, as the option A given says that Mohit is a student in Joseph, so since he is residing there, so he can collect the amount from there. So he's exempted that way. So whatever amount he is collecting is exempted. He can send in everything. Second option is given that Mohit is collecting the money in USD as a foreign contribution for the election of his father, hence he is prohibited. Okay, this is easily understandable that no such contribution can be done because he wants that contribution for the election purpose, and so it is prohibited. Third option says that election commission does not permit, if they allow, if they won't object, then it is permitted, and if they put any kind of the restriction or prohibition, then it is not. But then fourth, it says it is permitted if the RBI has no objection. So here, if we know the law says that, especially if you see section 3(1)(a) of the FCRA, it says that very clear and crisply it has said that no foreign contribution shall be accepted by the candidate for election. Matlab, for election, it is strictly prohibited. Any kind of the foreign contribution made specifically for the purpose of the election is strictly prohibited. So this is very much clear. So accordingly, you can mark the correct answer as option B. Here, Mohit is collecting the money in USD as a foreign contribution for the election of his father. Hence, it is prohibited. Here, the purpose for which he is collecting, that is not there. That is prohibited under the section. And so accordingly, the correct answer is option B. So we have discussed the two case scenarios wherein we have seen that there is a full scenario and it is followed by some MCQs. Like MCQ 5 is also based on case scenario 2. Then MCQ number 6 is also based on this case scenario 2. Now, and MCQ 7 is also based on case scenario 2. Now, we have written independent multiple choice questions. What are these independent multiple choice questions? Let's explain this with the help of an example. Suppose if we take the example of MCQ 14, this is an independent one. It's a two-liner sentence, or rather two sentences. It's a two-liner MCQ followed by 4 options. So 4 options are there. All the options, if you see, are near to each other. So you have to choose, if you're well conversant with the provision, then only you can choose the best answer. BOD, that is Board of Directors of the listed entity, shall be composed of executive and non-executive directors. The optimum limit of non-executive directors shall be. They are not saying this lines, 2 lines are not given with respect to anything, situation or facts. You just have to remember the provision and derive the answer. So as we know, whether if you see less than 50%, okay, it seems fine. Now the next option is not be more than 50% of the BOD. This also seems fine, and not less than, like these 3 options, if you see, are very near to each other. Those who have read the provisions very carefully, they only can reply to this answer. So can any one of you tell me the answer in the query pad? We are waiting. Okay, let us just tell you the answer of this. This is based on Regulation 17. So if we see Regulation 17, it talks about the composition of the board. And it says the BOD, that is Board of Directors, shall have an optimum combination of executive
and non-executive directors with at least one women director. Since we are not talking about women director here, we have not given the option, so it is not like that the answer is wrong. So don't say, like some students might say, that we have not given one women director. So one thing is, student, you have to choose whatever options you are being given until and it's outrightly wrong. And the word here is not less than 50% of the board of directors shall comprise of non-executive directors. So then which option will be correct? Option C. So this is how you will be choosing the answers. You need to remember you don't have to remember this, like I told you, it's based on regulation 17. You don't have to remember the regulation. The best part with the MCQ is that if you know the provision, you don't have to write it. आपकी English language check नहीं होगी, but your knowledge will be tested because you have to apply that knowledge. But one more thing about the MCQs in specific is that they are not required to give reasoning first. Yes. Okay. And you require to mark the appropriate answer. Means out of the options are so near. So you need to read the given options also carefully. Sometimes it happens you read quickly and you cannot make out the difference. And just looking prima facie that you see, oh, this option is right. So you need, but it may be possible that some twist has been made in that particular option, and because of that option is not correct. So you need to read each and every given options carefully, because options is very near to the correct answer in order to confuse you, in order to test you. So read it carefully. And for the one more aspect, that MCQ is scoring also easy to score. Because if you write the correct answer, you mark the correct answer, definitely you get the full marks. And if you mark incorrect answer, as such there is no negative marking, but you lose that complete mark completely straight up. Yes. So be very clear. One more example that we will be taking is MCQ number 19. Very short. A public company should have minimum of 3 members and 3 directors, 3 members and 7 directors, 7 members and 3 directors, 7 members and 7 directors. So this is very simple. However, in order to answer this question, you need to apply 2 sections. That is section 3 and section 149. Subsections are also there, but we are just talking about the main section. That is, you have to apply section 3 and section 149, and accordingly then you will be able to derive that the correct answer is option C, because 7 members is coming from section 3 and 3 directors is coming from section 149. So you need to apply 2 sections simultaneously. On this note, we would also like to tell you, while you are writing the descriptive answers, many a times students ask us that like we are talking in terms of sections again and again. Do we need to quote the section numbers? You need not remember each and every section number. There is no need for you to remember each and every section, but at least you can remember the main sections, like 149 is there, 188 is there, 185 is there. If you are in the habit of reading detailed books, then in that way, like if you are reading 149, so when you will be reading the section, you will be saying according to section 149, which is qualification, this, it will automatically be in your mind. And though there is no negative marking for not writing the sections, or your marks will not deducted for the sections, but being professionals, I will not be saying you are doing a professional because you are already a professional. The examination is just there for you to give the degree. आपको सिर्फ एक डिग्री मिलने की देर है. You are already a chartered accountant. So being a professional, some professionalism should be reflected in the answers that you are writing. It will definitely, we think, will create an impression that you know something more. And you are not just writing the answers like that. So moving further,
let's discuss on this note. Let's discuss some more questions. Yes. Now let's take a descriptive question also for your reference over here in order to understand how you can go with the writing of descriptive answers. Let's take question number 1A. Here you are saying this is the evaluation and synthesis based question, as already said, because it comprises of different provision, different issues clubbed in a one main scenario. So there you need to ponder upon the different provisions in order to conclude your answers. Now, if the question here says that Anusuya is a political person, okay. Now, recently, and he is also in the position of the chairperson. Now, recently, she was involved in taking a bribe, okay, and she was caught red-handed, and charge sheet was filed, and this matter was pending before the court of law. Now, here one more company is there, Vikrant Cosmetic Limited, which is a listed entity having 15 directors in its board. So here, one woman director in the board resigned on 30th June 2021. So take a note wherever the date is given of any, on any date of resignation or of any date of appointment, just take a note of that particular date. So here the board woman director has resigned on June 30th, 2021. So intermediate vacancy was created. Now they just company thought to fill the name of Anusuya they proposed the name of Anusuya to be filled for women director. So now since the 3 independent directors are there in the board, and now company want to increase the number of the directors in the board from 15 to 17. So the board meeting was held on 17 September 2021, and they thought to put the following agenda items before the meeting. So Anusuya was to be inducted in the board of directors women director because already an intermittent vacancy was there. Increase the number of directors from 15 to 17. Then since Anusuya is not having any pecuniary relationship, so they also decided that she may be put in the category of independent women director. And the independent director opposed to the proposal for the appointment of Anusuya as women as well as independent director. They were not in agreement that she may be appointed as independent women director. So here, based on the stated facts, now you have to answer the questions. First question is how and within what period the intermediate casual vacancy of women director can be filled up. Since you must know what the law is. If you are not aware of the law properly, then you will not be able to make it out by what time and how the vacancy created of the women director should be filled under the Companies Act. So you need to understand the provision. So in this case, what is being required, you need to know the relevant. If you see, the relevant provision is being covered under the rule of the respective act, that is the Companies Act Appointment and Qualification Rules of the Companies Act. And this is the Rule 3, which is clearly provides that any intermediate vacancy of a women director shall be filled up by the board. First, who is going to do it up? It should be filled up by the board. And when at the earliest, but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. If you understand this requirement for the filling of the this intermediate vacancy, then you can easily answer the given question. So according to the law, the intermediate vacancy of women directors since was caused on 30th June 2021, which was provided in the question. Yes, and the board meeting date is also provided in the question. Yes. And now you have to apply the law. Since is what the law should be applied in the given situation. These are the concrete facts given in the question. From there, you have derived the relevant information, and then you have applied the law saying that the vacancy of women director shall be filled up latest by 30th September 2021, because this is 3 months from the date of vacancy. Because meeting was held in September 17 and 3 months was calculated to be 30th September. And since the law says whichever is later, and so according to that, it shall be filled up latest by 30th September 2021. So Nisha ma'am has told you about the legal provision. Let me just add one more thing to it. Generally, what we say that while writing any descriptive question, you should write the provision of the act. Then you should write the facts of the question. Then you should correlate the facts and
correlate the facts and the provision, and then give the conclusion. Okay. Now in this question, the question was of how many marks? Actually, it contains 4 parts. Yes. And it is of 8 marks. 8 marks. So even if we don't know the breakup of marks, we have to attempt all the 4 parts. And we know it's of 8 marks. So mota it will be 2 marks each, or maximum 2 or 4. So since we know that how much we have to write, so if I say it's of 2 to 3 marks, what we have done? We have written the provision. We have written the provision of the act. And if you see, cleverly, we have given the facts, and we have correlated, and we have given the conclusion. Facts कहाँ है? हमने बता दिया कि भाई ये इस दिन कॉज हुई थी, बोर्ड मीटिंग इस दिन होल्ड हुई थी, और कंक्लूजन क्या दिया हमने कि 30 सितंबर तक वो फिल हो जानी चाहिए. कैसे? क्यों ये 30 सितंबर क्यों आई? हमने यहाँ पे क्लेवरली ये भी बता दिया, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी. तो अगर आप देखें तो हमने ये सारी चीजें एक साथ दी हैं, लेकिन हर चीज क्लियरली निकल के आ रही है. फैक्ट्स भी है, कोरिलेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है दैट इज 3 months फ्रॉम द डेट, दैट इज 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, और हमने कंक्लूजन भी दे दिया. सो वी हैव रिटन द आंसर according to the marks that are being assigned to that particular question. Next thing, one more thing, ma'am, we won't be remembering according to the second provision of rule 3 this. It's okay, just write according to the company's act, because in this case it's not necessary that the student will be remembering rule 3 this, so you can write it. Ma'am, we cannot write the exact language, provide that any intermittent vacancy of a women director shall be filled up by the board at the earliest, but not later than immediate next board meeting. अरे बाबा, you will not be remembering all this, but at least आपको key points तो याद है ना? That क्या कौन सी वैकेंसी है? इंटरमिटेंट वैकेंसी. किसकी इंटरमिटेंट वैकेंसी है? विमेन डायरेक्टर की इंटरमिटेंट वैकेंसी है. कब तक फिलअप हो जानी चाहिए? Not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is earlier, whichever is later. तो आपको की पॉइंट्स याद रहेंगे. और अगर आपने बार बार डिटेल लॉ पढ़ा है तो आप ये लाइंस मोटा लिख पाओगे. दैट एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ अ विमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड at the earliest, which cannot be later than the immediate board meeting or 3 months, whichever is later, क्योंकि हमें यहाँ बेनिफिट है. तो वो लाइंस आप अपने आप लिख पाओगे अगर आपने पढ़ा है तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को एज पर मार्क्स लिख सकते हैं. अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर. इसी का जो सेकंड पार्ट है, बस मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ. ये हम जो क्वेश्चंस का हम टाइप यहाँ पे डिस्कस किए, इसे इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस यानी एप्लीकेशन बेस्ड, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया बिकॉज इट इज कंपल्सरी, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर जनरल टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ इट्स नेचर. अब आपने देखा कि ये हमने 149 रूल 3 के बारे में पढ़ा है. नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन व्हिच इज इन दिस पार्टिकुलरली इट इज रिलेटेड टू, लेट्स टेक पार्ट थर्ड सेज whether Anusuya can be inducted in the board of company being a political person that be charged by the ACB. आप देखो जो ये वाला पार्ट है, पार्ट थर्ड, ये किससे डील कर रहा है? इट इज डीलिंग विद सेक्शन 164 बिकॉज इट इज डिफाइनिंग कि आप कब कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो सकता है या कब वो एलिजिबल हो सकता है अपॉइंटमेंट के क्वालिफिकेशन के लिए. तो यहाँ पे आपको 164 का रेफरेंस देना है. तो इसलिए मैंने आपके सामने ये वाला थर्ड पार्ट लिया इन ऑर्डर टू मेक यू कि हाउ वी हैव पुट डिफरेंट इश्यूज, वी हैव इंटीग्रेटेड मोर देन वन सेक्शन in order to come up with the answer, to make little bit this type of question more tricky, how you will correlate the one common fact under the different situations. So these type of things are being asked. Okay, तो मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं ले रही हूँ because everything is given to you just for reference. I have made you to understand. ये तो हमारा इवैल्यूएशन सिंथेसिस बेस्ड था. हम एक आधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं क्योंकि बच्चे को ये भी इश्यू होता है कि अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हाउ वी शुड गो विद द राइटिंग ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट? Yes.
So let's take a direct question. Okay, so if we have to take a direct question, let's take question 4. Yeah. 4A. 4B. Yes. Let's take question 4B. So this is question 4B2. B1, sorry. Javer Limited, a diamond manufacturing company, is undergoing corporate insolvency resolution process. They have given a certain situation to you. Say they have given कि एक company है, उसका काम है, diamond manufacturing का है. It's undergoing corporate insolvency, CIRP. And when was CIRP initiated? It was initiated on 1st January. And who this Mr. Shubh is acting as the IRP? And later he was even appointed as the RP. Now we have given that this Mr. Shubh is very, very hardworking also, but he's thinking that he should get the plan approved before the last date of the CRP. But he's not able to due to external factors. He cannot get it. Now what he is thinking. He realized that he is unable to decide to which resolution plan can be taken to the committee of creditors for approval, and also he will need another 3 months to get a resolution plan approved. A big situation is given to you. You are his partner in an IRP, in an insolvency professional entity. Now come the main part. Advise as to the factors that need to be considered before taking the resolution plan to the committee of creditors. The question is of how many marks? 3 marks. Such a big situation is given. And बच्चे कहेंगे इतना tough question they have asked for 3 marks. Yes. Just read the question carefully. Requirement क्या है question की? Advise as to the factors that need to be considered before taking the resolution plan to the committee of creditors. So, क्वेश्चन ने सिर्फ ये पूछा है कि क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं और वो क्या फैक्टर्स हो सकता है. लेट्स सी. क्वेश्चन जैसा दिख रहा था श्रद्धा, इट वाज नॉट लाइक दैट. मतलब स्टूडेंट्स जनरली दे ट्राई टू टेस्ट इन सच अ वे, सो यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है and accordingly the answer is to be given. You have to only mention the factors and not more than anything else required. आप क्वेश्चन की आप रिक्वायरमेंट थी सिर्फ फैक्टर्स की, सो आंसर भी आपका फैक्टर्स पे ही डिपेंडेंट है, कुछ और नहीं दिया गया है. हम आपको नहीं बता रहे क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो आपने पढ़े होंगे या आप पढ़ सकते हैं. लेकिन some students might say, ma'am, this is sheer time wastage. Okay. आपको एक सिचुएशन दी गई है, उसके बाद आपसे कुछ पूछा गया है. कई बच्चे उस सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं. वी कैन से कि आपसे डायरेक्टली भी ये पूछा जा सकता था, व्हाट फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड. बिल्कुल, दैट कुड हैव बीन अ वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर सेम रहने वाला था. मिस्टर शुभ का नाम लिखने की भी हमें जरूरत नहीं थी. लेकिन कई बच्चे आई एम डैम श्योर, स्पेशली जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, उन्होंने सच सिचुएशंस फेस करी होंगी, क्योंकि वो क्वेश्चंस में ही इतना खो चुके होंगे कि वो ये भूल गए कि रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, और वो वहीं पे पैनिक हो जाते हैं. आपकी लाइफ में से बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी कि जहां पे आपको सिचुएशन दिखाई बहुत बड़ी देगी, लेकिन सोल्यूशन इतना सा होता है, और उस सिचुएशन को देखने की वजह से सोल्यूशन पे आप फोकस कर ही नहीं पाते. इट इज नॉट जस्ट विद द एग्जामिनेशन, इट इज अ लाइफ सेविंग टिप फॉर यू. डोंट जस्ट लुक एट द सिचुएशन, लुक फॉर द सोल्यूशन. आपको एग्जैक्टली करना क्या है. द मोमेंट यू कम टू नो व्हाट यू नीड टू डू, you will be able to give the solution, whether be it this examination or any examination in your life. So you have seen कि यहाँ पर हमें एक situation दी और हमने उसका आंसर लिख दिया है. Just try, always try कि जब भी आपके पास कोई theoretical answer, direct theoretical answer हो, तो उसको आप points में break करके ही दें. It makes it easier for the examiner to look into it. And जैसे हमने, अब बच्चे कहते हैं कि मैम हम डिफरेंट पेन से लिखें, नो नीड, हम बोल्ड नहीं कर सकते, नो नीड. जब आप लाइन लिख ही रहे हैं उसी टाइम पे इसको अंडरलाइन करते हैं, जो भी आपको की पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखें. वी आर नॉट सेइंग दीज आर श्योर शॉर्ट फॉर्मूलाज, बट हाँ एक अंडरलाइन होगा तो हो सकता है एग्जामिनर की आईज उस लाइन्स को कैच कर. क्योंकि क्रक्स तो यही है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है. अगर आप उसको सिर्फ सिंगल वर्ड में ऐसे भी लिख दें
following are the factors to be taken care by the COC for approval before the COC by a resolution professional. तो आप ये बता सकते हैं, एक तो उसके अंदर आप सिंपली लिख सकते हैं the payment of insolvency resolution process cost should be there in the resolution plan. This is the one requirement. Then other requirement is, since here the person is operational creditor, Diamond Company, because when anything is done for goods and services, so he acts as an operational creditor. तो उसका आपको बता देना है, the payment of debts of operational creditor needs to be mentioned in the resolution plan. अब उसमें जो प्रायोरिटी ऑफ ऑर्डर या जो पेमेंट ऑफ ऑर्डर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर होगा, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 53. तो आप उसको लिंक कर सकते हैं कि अगर भाई लिक्विडेशन हुआ है तो किस हिसाब से क्रेडिटर को अमाउंट मिलेगा, और अदरवाइज आप बता सकते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर में 53 के अंदर कैसे आप सबको, जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. तो ये अगर आप शॉर्टकट में भी लिख देंगे, इतना सब ना लिख के, तो आप लिख सकते हैं एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 53 the payment is to be done to the operational creditor as well as to the creditor. The amount and everything, how it can be distributed, everything can be given. फिर आप ये बता सकते हो कि भाई जो रिजोल्यूशन प्लान में आपका मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में आप बता सकते हो, भाई कॉर्पोरेट जो डेटर है, हाउ इज मतलब गोइंग टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, then implementation and supervision of the resolution plan. Rather than mentioning the complete sentence, I mean to say, you can simply by writing the main point, main heading, आप वो भी लिख सकते हैं, but in a sentence form. But in a sentence form, मतलब एक फ्रेमिंग होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं आपने कुछ भी खाली बोल्ड पॉइंट लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. इसको थोड़ा फ्रेमिंग करके प्रॉपर मैनर में लेट डाउन करिए, तो भी आपका पर्पस सफाइज हो जाएगा, एंड वी विल कम आउट विद द कंप्लीट आंसर इन दैट केस. सो आपके कीवर्ड्स तो उस आंसर में आने चाहिए, बट उसके आसपास के सेंटेंस आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं. बट हाँ, कीवर्ड्स होने चाहिए, because it reflects on your understanding and your preparation. I suppose, Shraddha, we have already given a lot of मतलब clarity to the students how they can go with the writing of the examination. हमने मतलब स्टूडेंट्स आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बताया. हमने सर्टेन क्वेरीज दैट वी आर टेकिंग है, दैट वी हैव रिसीव्ड ऑफलाइन, जो बच्चों ने हमसे पूछी थी. सेक्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एजम्पशन के केस में अगर हम आपसे कहेंगे तो हमसे कहेंगे, कई बार ये होता है कि किसी क्वेश्चन पे फैक्ट्स जो होते हैं, मतलब थोड़ा सा आप कैसे कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन है या कोई कहीं पे कोई क्लैरिटी लैकिंग है, तो कई बार ये होता है कि आपको आंसर देने में आपको एजम्पशन ड्रॉ करना पड़ेगा. आपको सिचुएशन सोचनी पड़ेगी कि इस कंडीशन पे ही मतलब इसका ये आंसर निकलेगा, तो यू आर ड्रॉइंग सर्टेन एजम्पशन. तो आप प्रॉपर अगर कोई एजम्पशन ले रहे हैं तो जस्ट राइट डाउन योर एजम्पशन ऑन व्हाट बेसिस यू हैव गिवन योर आंसर, और प्रॉपर एजम्पशन नोट फॉर्म में दीजिएगा कि हमने ये कंसिडर किया, एंड देन since that is not given in the question, it has not been defined over there, so on the basis of the assumption I have given, you have given that particular answer. So I assure you इस तरह की चीजें टेक केयर की जाती है, इसलिए assumptions जरूर लीजिएगा जहां पे आपको किसी जहां पे क्लैरिटी नहीं है, या यहाँ जहां पर एक ही चीज के एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, मतलब, और ऐसा नहीं कि वो मीनिंग आप निकाल रहे हैं, लेकिन इट्स लाइक क्वाइट एविडेंट की चीज में क्लैरिटी नहीं है, वहां पर आप assumptions दे सकते हैं by way of note, and if it's a valid assumption then it will be taken care of. हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है कि हाँ वी आर अपॉइंटिंग दो ऑडिटर्स आपके यहाँ इस समय इस लेवल पे नहीं है, बट इफ इट्स सम क्वेश्चन कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, XYZ मिस्टर ए इज अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, you take the assumption, I am taking an assumption that he is not a chartered accountant. Sorry, that's not a valid assumption, because अगर उसे statutory auditor की तरह आप appoint कर रही है कंपनी, तो obviously he is, or if we say that Mr. A has been appointed as a statutory auditor, तो obviously he is a chartered accountant. So आप ऐसे ही उस समय assumption मत लीजिए कि वो chartered accountant नहीं है, मैं ये consider कर रहा हूँ इसलिए question गलत है. Take valid assumptions and quote them by way of a note. Then moving to the next length of answer already discussed. Then these are the certain queries already most of the aspects we have covered in our earlier slides, in our everywhere we have come across with these issues. कई लोग पूछते हैं मार्किंग पैटर्न लॉ में क्या होता है, तो ऑफकोर्स इट्स अ स्टेप वाइज मार्किंग. आप प्रोविजन लिखते हैं, उसके कुछ मार्क्स अलॉटेड होते हैं, प्लस योर आंसर विद करेक्ट कंक्लूजन एंड द लीगल इश्यूज, उसके कुछ मार्क्स होते हैं. तो जनरली इसे स्टेप वाइज मार्किंग, तो इसलिए आप लिखिएगा सब कुछ. जहां पे देख लीजिए कितने मार्क्स आए, 2 मार्क्स के लिए आप स्टेप वाइज मार्किंग को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, वहां तो आप पॉइंट टू द पॉइंट लिखेंगे, लेकिन इट इज अ 4 और 6 मार्क्स, एंड देयर यू नीड टू
थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका जो आंसर है कमेंसरेट होना चाहिए आपके जो मार्क्स अलॉटेड है, तो वहां पे स्टेप वाइज मार्किंग पैटर्न को फॉलो किया जाता है. To add to it, if there is some question you feel that the whole paper was such कि जहाँ पे सिर्फ ना steps हैं, in that case you can elaborate, क्योंकि आपका अगर पेपर ऐसा है कि जिसमें सब कुछ बहुत छोटा छोटा लिखने के लिए, तो in that case since you will be left with so much of time, just elaborate. तो हमने कहा ना you are the best judge at that point of time कि आपको कितना लिखना है according to the time and notes. अब ये कि कितने मार्क्स अलॉटेड होते हैं, तो भाई अब ये तो नॉर्मली ब्रेकअप बता देगा. अगर क्वेश्चन कोई 4 या 6 नंबर का है तो उसका ब्रेकअप नॉर्मली आप इक्वल कर लेते हैं, या डिपेंडिंग अपॉन द लीगल प्रोविजन ऑफ क्या आंसर वन लाइनर है या क्या है, उस हिसाब से वो डिपेंड करता है. अब मार्क्स कितने अलॉटेड होते हैं फॉर एनी आंसर, तो भैया ये कि बेस्ट आंसर जो आप लिखेंगे उसमें आपको फुल मार्क्स मिलने की तब भी कोई गुंजाइश नहीं है, तो आपको एक आधा नंबर कम ही मिलेगा. 4 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मान लीजिए बेस्ट आंसर लिखने पे 3 नंबर से ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है. एंड बाकी इट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम. एब्सोल्युटली. और अगर आप बात करते हैं सेक्शन नंबर की, ऑलरेडी डिस्कस कि आपको साइड करना जरूरी नहीं है, बट यस यू शुड मेक इट एन हैबिट कि आप पढ़े भी और आप लिखे भी, कोशिश भी करें. हो सकता है आपको बेनिफिट है. मुझे जस्ट लुकिंग कि भाई बच्चे को आता है, हाँ जस्ट कि बच्चे को आता है. फिर दूसरी चीज कि भाई आप कैसे गुड मार्क्स ला सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने आंसर को ड्राइव करिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, और उसको प्रॉपर मतलब ले डाउन करिए विद प्रॉपर अपने जो लीगल प्रोविजन आप लिख रहे हैं उसको केयरफुली इन द क्रक्स एज पर रिक्वायरमेंट आप उतनी ही इंफॉर्मेशन लीजिए जितनी आपकी जरूरत है, और ये आपके कमेंसरेट होना चाहिए और कंप्लीट आंसर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ प्रोविजन लिख दिया और छोड़ दिया कि भाई एग्जामिनर खुद सोचेगा व्हाट इज द आंसर. दैट शुड नॉट बी देयर. तो प्रॉपर आपका कंक्लूजन भी इसके अंदर आना चाहिए दैट रिफ्लेक्ट्स अ कंप्लीट आंसर. तो टेक केयर कि आपका कंप्लीट आंसर हो फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेरी रिगार्डिंग द 185 सेक्शन. अब बच्चे ने पूछा था बट आई एम नॉट एबल टू मेक इट आउट. योगेश ने किस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा, बट यस 185 में वो एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी के केस में. अगर आप देखो कि नॉर्मली जो 185 सेक्शन है टॉक्स अबाउट लोन टू डायरेक्टर्स. अभी क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट सब सेक्शन अगर आप उसको देखेंगे ध्यान से तो वो रेस्ट्रिक्टिव मतलब पूरा प्रोहिबिटिव क्लॉज है. मतलब वो प्रोहिबिट करता है कि किसी को भी लोन, जो डायरेक्टर्स है किसी भी कंपनी के, उसको लोन नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई गारंटी ना ही कोई सिक्योरिटी दी जाएगी. लेकिन जब आप उसी के सब सेक्शन 2 में जाते हैं तो इट्स गिव अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कि भैया कुछ केस में सर्टेन पर्संस को in which directors are interested, they can be given under certain conditions, उनको लोन दिया जा सकता है. तो उसमें वन ऑफ द वो कौन पर्सन, वन ऑफ द प्राइवेट कंपनी. जो बीच में जब एग्जामिशन की एक नोटिफिकेशन आई थी 5 जून 2015 में, जब उनपे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी 2015 में कि भाई प्राइवेट कंपनीज के जो डायरेक्टर मतलब उनको है ना नहीं दिया जाएगा, लोन नहीं दिया जाएगा उनके डायरेक्टर्स को. फिर लेकिन 17 जून 2017 में फिर आए 13 जून 2017 में इन्होंने बोला कि दे सकते हैं, लेकिन उन्हें सर्टेन कंडीशंस लगा. अब उस कंडीशंस में लगा के उन्होंने कह दिया कि अगर उस कंडीशंस में वो फॉल होती है तो उनको एग्जेम्पशन मिलेगा, और अगर उन कंडीशन से प्राइवेट कंपनीज फॉल नहीं होती है तो उस पे ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगी, यानी कि उन्हें लोन मिल सकता है. क्योंकि प्रोहिबिटिव क्लॉज तो रोक लगाता है, लेकिन ये प्रोहिबिटिव क्लॉज जब एग्जेम्पशन मिल जाता है तो ये हो जाता है कि उनको लोन मिल सकता है. तो यू नीड टू चेक व्हाट आर द 3 कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू दैट. I will add one thing to this particular query. ये आंसर जिन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया है, ये आंसर सिर्फ उन्हीं को समझ में आ पा रहा होगा. उसका बहुत बड़ा रीजन, क्योंकि किस इंटेंशन से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो हमें भी नहीं पता. हमने इसमें सब कुछ लिख दिया है, यही आप लोग भी करते हो. यहाँ पर क्वेश्चन में ही क्लैरिटी नहीं थी. अगर आप हमें क्वेश्चन लिखते वक्त ही क्लैरिटी नहीं बता पा रहे कि आप हमसे पूछना क्या चाह रहे हो, हम आंसर आपको कैसे देंगे. और फिर बच्चों का आता है हमने तो एग्जाम में सब कुछ लिखा था, बच्चे आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहे. आप सोचो योगेश, आपके लिए नहीं ये सब चीज, ये ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए लर्निंग पॉइंट है. ये आपका ही नहीं, सभी बच्चे करते हैं. उन्हें लगता है हमने तो सब कुछ पूछ लिया, आप जो पूछना चाह रहे थे वही आप हमें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. सो पेपर जो आपके चेकर्स हैं
उनको आपको इस तरीके से सोचना है कि आप अपनी बात तो रख पाओ सामने पूरी, और वो तभी रिलेट पाओगे आप। आपका कोई अभी अन्वेषा एमडी ऑफ अ प्राइवेट, मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है, हमें तो ये भी नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में बात थी, जस्ट सेक्शन 185 एंड एग्जेम्पशन टू द प्राइवेट कंपनीज। शी हैज सेड इट जस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, वी डोंट नो एनीथिंग। दिस इज द एग्जैक्ट मिस्टेक यू मेक इन द एग्जामिनेशन। आपको तो लगता है मैं सब कुछ लिख के हूं, दिस इज नॉट सब कुछ, एक तो लाइंस कंप्लीट नहीं है। So how the answer will be same if Anvesham MD of private company? Just look at the framing of the sentence. Beta, this is not for you, this is for every student. I am reiterating it again and again. आप एग्जामिनर को सोचो, आपको उसको समझाना है जैसे कि कभी आपने ये समझा था। जब फर्स्ट टाइम आपने भी समझा था तो आपको भी पूरी क्लैरिटी की जरूरत थी। उसी तरीके से अब एग्जामिनर जिसके पास ऑलरेडी नॉलेज है अपनी, उसको समझाना है। तो प्लीज कीप अ नोट ऑफ दिस ऑल्सो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी जितनी भी टिप्स थी, अगर आप उसको उन 3 घंटों में लिख के नहीं आ पाए ना, कोई फायदा नहीं है। प्रिपरेशन आपकी अपनी जगह है, लिख के उन 3 घंटों में रणभूमि में लड़के तो आपको ही आना है, हम नहीं आ सकते, हम लड़ चुके। सो अब नाउ इट्स योर टर्न एंड यू कैन डू इट। अभी भी आपके पास टाइम है, इम्प्रोवाइज आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बस यही है, ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं दादी, ये सेम चीज उसी का कंटिन्यूएशन में है कि अंडर विच कंडीशन अ लोन कैन बी गिवन टू अ प्राइवेट Look, she has explained everything to you because she was not knowing what to explain to तो you. क्लैरिटी हर चीज को लिखते समय आपकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, मेक इट अ पॉइंट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है जिसमें प्रेमा के बारे में पूछा है, तो स्टूडेंट प्रीति लखोटिया is saying that some amendment has come in the ODI under the automatic route, पर ये जो रिवाइज्ड आपकी ओडीआई है, इट वाज रिवाइज्ड इन जनवरी 2016 और उसी में उस समय वो 100% को 400% से रिप्लेस कर दिया गया था। और माइट बी शी इज लुकिंग एट द ओल्ड लॉ बिकॉज इन द प्रेजेंट आल्सो इट इज 400%। यस, सो आई विल से कि हमेशा लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखिए। अगर आप कहीं से कुछ देख रहे हैं तो चेक इट। अगर मान ली कोई चीज आपको कहीं मिलती है जो कॉन्ट्रडिक्टरी है किसी स्टडी मटेरियल से या कहीं भी किसी चीज से, तो गो विद द एक्चुअल प्लेस। ऑथेंटिक में आपका नोटिफिकेशन है, आरबीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उस पे जाइए, उसमें चेक करिए एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी एंड चेक इट आउट एंड कंफर्म व्हाट इज द एक्चुअल लॉ। And there are some key points we have written that you need not give generalized answer, vague answer. We have already discussed this. You should be writing in legible English language. No shorthands, diagrams may be avoided. अगर डायग्राम देना है तो पहले एक्सप्लेनेशन दीजिए और फिर डायग्राम दीजिए, फिर इतना टाइम होगा नहीं। शॉर्ट फॉर्म व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस व्हाट्सएप लैंग्वेज? हाउ आर यू, नॉट सो, नॉट टू बी गिवन। आंसर को लिखने का तरीका ये होता है, बच्चे लिखेंगे ए, मतलब ये तो चलिए फिर भी अलाउड है, लेकिन हर चीज में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करना, please don't write such things. Or if abbreviation is to be given, first define. If you have to write registrar of companies, पूरा लिख के फिर ROC लिख के फिर आप आगे आने वाले पॉइंट्स में इसको खाली ROC की तरह लिख सकते हैं। Okay, one more thing, we have received some more queries. So there is one student, Aditya Parekh and Komal Mittal. They have asked that what is the marking pattern of law? How marks are allotted for a question of 4 marks? And that has been already discussed. And any marks for section number, we have discussed how to write answer to score maximum marks in law, writing answer, this all has been discussed. Yogesh, your query has been taken up. And apart from that, we have received one more query. This is Vidula Yogesh Deshpande. Please, may I know how to interpret questions and provisions on my own and counter check if I am wrong with myself so I don't write wrong answers. Just a moment. Interpret questions and provisions on my. Okay, so this we have taken up. Yes. How we have taken up? If you see that we have given you the mock test paper, this is how you can check it. Apart from that, like ma'am told you that this is the question.
how you will read it and how you will be answered. So this has been taken up. If you have joined late or somehow you have missed it, the recording will be available to you. And you have said that how I can counter check on my own if I'm not wrong. Like you want to, this is very good that you want to self-assess. So be true to yourself. You will be, हम खुद पता होता है हमने क्या गलती करी है. अगर उस पॉइंट से आप क्वेश्चन देखोगे कि मैंने तो लिखा है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे. बट अगर आप देखना चाहोगे कि ओके, लेट मी सी इज देयर अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, डोंट बी टू हार्श एंड क्रिटिकल ऑन योरसेल्फ, जस्ट बी ट्रू व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू आर. वही मैंने कहा ना कि दे शुड बी ओपन होना चाहिए कि एक्सेप्ट मिस्टेक. अगर कोई कमी है तो उसको इम्प्रोवाइज आप कर सकते हो. Prachi Jain has asked, ma'am, will these lectures be available in recorded form? Yes, dear, these are available. Manjunath MT has asked, madam, in BOS portal questions for practice is available. My doubt is that whether these answers were in compliance with law updates. No, these are not in compliance with the latest updates. So either you may skip them for the time being, or chartered accountant भैया बस डिग्री मिलनी बाकी है, सो उसको खुद अपडेट कर सकते हो. और आप प्रोफेशनल हैं वाकई में. अब जो प्रोफेशनल तो वही ट्रू प्रोफेशनल है, वो कीप हिमसेल्फ अपडेटेड एट ऑल द टाइम्स. सो प्लीज कीप योरसेल्फ अपडेटेड. आप अपडेट कर लीजिए, आप खुद चेक कर सकते हैं. आपको रेलेवेंट साइट्स पता है, एमसी की वेबसाइट पे जाइए, हमारे स्टडी मटेरियल जो लेटेस्ट अपडेटेड अवेलेबल है, आप उनसे क्रॉस चेक कर सकते हैं. एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड. Though we have already surpassed the time, we are crossing the deadline of 12:30. We are at 1 p.m. right now. But then also we would like to add, dear students, ये सिर्फ एग्जाम आपको इस समय सीए प्रोफेशनल बनने के लिए, डिग्री देने के लिए आपके साथ कंडक्ट किया जा रहा है. ये आपके एटीट्यूड पे होगा. प्रिपरेशन आप अगर अच्छे से कर चुके हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए. कहीं पे भी आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रेजेंटेशन दोनों साथ साथ चलेंगे. अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, इंप्रेशन तो आपने कर लिया, लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा. नौकरी आपको मिल चुकी है, बट काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, वरना आपके बॉस को पता चल जाएगा सर के ऊपर से दिख रहा था, अंदर से कुछ नहीं है. लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और आप लिख नहीं पा रहे हैं, वो भी इक्वली बुरा है. तो बोथ द थिंग्स हैव टू गो हैंड इन हैंड. पेपर प्रेजेंट करने में इतना टाइम नहीं लगा देना कि आप सिर्फ सुंदर सुंदर दिखे और कुछ होना, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो बस यही कहेंगे कि आप डोंट चेंज विद द चेंज, बट चेंज शुड बी बिफोर द चेंज. आप इस क्रक्स को समझिए, इस लाइन को. तो इसको इम्प्लीमेंट करते हुए अपने लाइफ में प्लीज गो अहेड और अपने चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब आप अपनी चीजों को अडेप्ट करने के लिए, नई सिचुएशन के साथ इन ट्यून होने के लिए जो चेंजेस लाते हैं, दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड एंड दैट चेंजेस ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ. तो इसी के साथ हम अब इस सेशन को एंड करना चाहते हैं, विराम देना चाहते हैं, और इस एक्सपेक्टेशंस के साथ that you are going to gain the maximum benefit, because we have taken up all the small to small issues that generally students face during the examinations or while studying or preparing. So with this, we would like to end the session. Wish you all the best. Thank you.